हेलो 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 माय डियर सीएमए इंटर ग्रुप स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग? पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? क्या हाल चाल तुम्हारे? चैप्टर नंबर 2 चालू है। 3 क्वेश्चन हो गए। तुम पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए? क्या बस ऐसे ही आ गए? बोले कुछ नहीं करते, चलो लेक्चर ही अटेंड कर लेते। कुछ हो तो नहीं रहा है, चलो लेक्चर ही अटेंड कर लेते। सिर्फ लेक्चर अटेंड करने से कुछ आउटपुट मिल रहा है क्या? कि घर पे पढ़ भी रहे हो? बोलो फटाफट। जल्दी जल्दी बताओ यार। क्या हाल है? यस सर, लर्न कर लिया। कितने क्वेश्चन हो गए अपने को ऐसे? चैप्टर नंबर 2 में से कितने क्वेश्चन हो गए बताएंगे तो? मेरे को याद नहीं है, मैं भूल गया इसलिए पूछ रहा हूँ। कितने क्वेश्चन हो गए चैप्टर नंबर 2 में बताओ? सर पढ़ रहे हैं। पढ़ना ही पड़ेगा। एग्जाम मुंह पे आके खड़ी है। सर हमारे हाल बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप बताओ। अच्छे चल रहे हाल? वाह, क्या बात है। इतना कॉन्फिडेंस अपने आप के ऊपर। बहुत डर लग रहा है। अच्छा है, डर होना जरूरी है। डर रहता ना इंसान में तब मेरे को अच्छा लगता है। डर होना चाहिए। डर रहता है ना तभी इंसान अच्छे से ना काम करता है, पढ़ाई करता है। ठीक है। तो कल हमने लास्ट लेक्चर में, जब भी हमारा परसों लेक्चर हुआ था, तो उसमें हमने देखा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का डिफरेंस देखा था। फिर उसके बाद वैल्यू चेन के बारे में पढ़ा था। वैल्यू चेन आपको आते साथ क्लिक हो जाना चाहिए। प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सपोर्ट एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज में आपका आ जाता है इनबाउंड, ऑपरेशन, आउटबाउंड। ठीक है। और फिर उसके बाद अपन ने देखा था सपोर्ट एक्टिविटीज, प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी, ये वो। और फिर अपन ने देखा था कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कैसे इंप्रूव करे, क्या ट्रेनिंग, उसके क्या टेक्निक्स हो सकते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, स्पेशल मीटिंग्स, आउटसाइड कंसल्टेंट्स, जॉइंट मीटिंग, ये सारे पॉइंट्स अपन ने उसके अंदर देखे थे। आज के लेक्चर में अपन पेस्टल फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइडेंटिफाई द की ड्राइवर्स ऑफ योर पेस्टल फ्रेमवर्क। तो ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है। अगेन ये ज्यादा मतलब ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने को मिस नहीं करना है। पेस्टल फ्रेमवर्क के अंदर अपने को पता है PESTEL, इन सब वर्ड्स का अलग अपने आप में क्या है, अलग अलग क्या रहने वाला है। इन सब में अपने आप में अलग अलग उनका मतलब है। P फॉर पॉलिटिकल बोल दो, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, फिर इसके बाद T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एनवायरमेंटल और L फॉर फिर आपका लीगल। वो अपने को सबको पता ही है। तो अभी उसी के बारे में अपने को डिटेल में लिखने का है। आइडेंटिफाई द की ड्राइवर्स, मैंने तुमको बोला है यहां से पहले, इससे पहले जो भी ये लोग देते ना, सिर्फ ऐसे जबरदस्ती का माल चिपका के देते। सिर्फ जबरदस्ती का। अपने कुछ काम के रहते क्या आधे से ज्यादा चीजें नहीं, कुछ काम के रहती नहीं है आधे से ज्यादा अपनी चीजें। और सिर्फ अपने को ना पागल बनाने के लिए इन्होंने ना डाल के रखी हुई है। बिना मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए उन्होंने अपने को डाल के दिया है। तो इधर से मतलब है अपने को जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन विच द विच हेल्प ऑफ पेस्टल फ्रेमवर्क। तो अपने को पेस्टल फ्रेमवर्क जो है उसको क्या करने का है, जस्टिफाई करने का है, उसको एक्सप्लेन करने का है, उसके बारे में चर्चा करने की है। तो पेस्टल फ्रेमवर्क के बारे में चालू करते हैं। पेस्टल फ्रेमवर्क क्या होता है? पेस्टल फ्रेमवर्क कवर्स, लिखना चालू करो। पेस्टल फ्रेमवर्क कवर पेस्टल फ्रेमवर्क कवर 6 मेन types of environment, 6 main types of environmental influence, environmental influences, namely political। अब उनका नाम बताएंगे अपन। namely political, economic, social, technological, environmental,
एंड लीगल। तो ये आपके क्या बन जाते हैं, ये सारे आपके बन जाते हैं आपके 6 टाइप्स पेस्टल फ्रेमवर्क के अंदर के। अब ये 6 टाइप्स जो है पेस्टल फ्रेमवर्क के अंदर के, उसके अंदर के एक चीजों का भी क्या करेंगे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका कौन रहने वाला है, सबसे पहला आपका रहने वाला है पॉलिटिकल, फिर इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल। अब एक एक करके अपने को क्या करेंगे, इसके बारे में डिटेल में अपन चर्चा करने का काम करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका रहेगा जिसके बारे में अपन चर्चा करने वाले वो रहेगा पॉलिटिकल। पॉलिटिकल के बारे में बात करते हैं। पॉलिटिकल सारी चीजें आ जाएगी आपकी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल instability poses threats to business organization, poses to business organization, whereas political stability, and a favorable government creates opportune business environment. ये आपका क्या बन जाता है, पॉलिटिकल के बारे में बन जाता है। नेक्स्ट आपका कौन था, इकोनॉमिकल। तो भाई साहब अभी अपन इकोनॉमिकल के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिकल economic growth leads to an increase in customer expenditures, which in turns give companies the opportunity to expand, gives companies opportunities to expand operations and earning higher profit. To expand operations and earning higher profits. Earning higher profits. On the contrary, recession increases competitive pressures and decreases customer expenditure. On the contrary, recession increases competitive pressure competitive pressures and decreases customer expenditure
increasing customer expenditures, increasing cause of threat to the companies. Cause of threat to the companies. तो आपका इकोनॉमिक का पॉइंट बन जाता है. एक पॉलिटिकल हो गया, एक इकोनॉमिकल हो गया. आप कौन सा देखना है? सोशल. इस सब पॉइंट्स बहुत डिटेल में अपन ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं. बराबर है क्या? सोशल पॉइंट, सोशल के ऊपर आएंगे. सोशल मतलब आपको पता है, सोशल इन्फ्लुएंस, आसपास का एरिया. सोशल इन्फ्लुएंस include changing culture and demographics. Changing culture and demographics. Changing culture and demographics. Demographic forces are outcomes of change. Demographic forces are outcomes of change. Outcome of changes in the characteristics of a population. In the characteristics of the population. Characteristics of the population, such as age, gender, ethnic origin, race, social class, sexual orientation, gender, ethnic class, race, social class, sexual orientation, like the other forces in general environment. Like the other forces in general environment. Other forces in general environment. Demographic forces present managers with opportunity. Demographic forces present managers with opportunities and threat. With opportunities and threat. That can have major implication. For organization. That can have major implication for organization. ये आपका क्या बन जाएगा? सोशल इन्फ्लुएंस बन जाएगा. कितने पॉइंट हो गए भाई साहब? पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, सोशल हो गया. क्या क्या बचा? टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल. टोटल 6 पॉइंट में से 3 पॉइंट हो गए. ये 2 नहीं 3 है. अब करते
technological. Fourth point, technological. Technological influences refers to innovation. Technological influences refer to innovations. Refers to innovations such as artificial intelligence, internet, nanotechnology, or the rise of new composite material. और द राइज ऑफ कंपोजिट मटेरियल. तो ये आपको क्या था, टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है. टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस का ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, इतना सही पॉइंट है. एक सेकेंड, एक पेज ऐड करने दो. ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो आपका पॉइंट रहेगा एनवायरमेंटल. फिफ्थ पॉइंट एनवायरमेंटल. दो पॉइंट बच गए, एक एनवायरमेंटल बच गया और एक लीगल बच गया. ठीक है, एनवायरमेंटल स्टैंड्स specially for green issues, such as pollution and waste, The environmental factors have now become extremely important for organizations as countries across the globe are increasingly concerned with the environmental changes and are striving towards green, clean, and are striving towards
and are striving towards green, clean and renewable source of energy. Green, clean and renewable sources of energy. सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये आपका क्या बन जाता है? एनवायरमेंटल बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चा लोग? एनवायरमेंट। अब यहां पर लास्ट पॉइंट जो है आपका वो देखते हैं, लीगल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? लीगल। लास्ट पॉइंट आपका रहेगा लीगल फैक्टर्स। तो लीगल embraces legislative constraint, legislative constraints or changes, constraints or changes such as health and safety, such as health and safety, legislations for health and safety, legislations or restrictions on company mergers, and acquisitions। तो आपका क्या बन जाता है? लीगल वाला पॉइंट बन जाता है। तो यह हमारे पेस्टल के पॉइंट्स थे। अगेन पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिकल, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर एनवायरमेंटल एंड अगेन एल फॉर लीगल। तो ये आपके पेस्टल एनालिसिस के पेस्टल फ्रेमवर्क्स थे जो अपने को पढ़ने हैं। काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं पेस्टल के ऊपर इनका सवाल पूछे जाने के, इसलिए ये बन जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे प्रोसेस, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का प्रोसेस। 5 मेन स्टेप्स है। ये अभी रिसेंटली पेपर में पूछा गया था, रिसेंट वाले पेपर में पूछा गया था। मेजॉरिटी बच्चे ये स्टेप्स को छोड़ के आ जाते, कुछ भी नहीं रहता है, बहुत आराम से आपके स्टेप्स रहते हैं। इसके अंदर 5 स्टेप्स रहते हैं, सिंपल सिंपल। सबसे पहले आपका कॉर्पोरेट मिशन वगैरह आपको समझना है, फिर आपके एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, फिर एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करके स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करनी है, और फिर वो स्ट्रेटेजी को क्या करने का? अपने को इंप्लीमेंट करने का है। तो ऐसे 5 स्टेप आपके बहुत सिंपल सिंपल इसके अंदर रहते हैं। चालू करते हैं फिर अपने स्टेप्स के साथ, बिना टाइम वेस्ट करे। तो 5 स्टेप्स, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा ये लिखने में। 5 स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस आर न्यूमरेटेड बिलो। फटाफट लिखेंगे अभी। Five steps involved in strategic planning are enumerated below। सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका सिलेक्ट द कॉर्पोरेट मिशन। Select the corporate mission and major goals. Select the corporate missions and major goals. तो आपका उसके अंदर का पॉइंट रहने वाला है the first component of strategic planning, the first component of strategic planning, the first component of strategic planning process is crafting the organization's mission.
is crafting the organization's mission statement, which provides the framework or context, which provides the framework, or context within which strategies are formulated, within which strategies are formulated. A mission statement has four main components. A mission statement has four main components. Mission statement has four main components. A statement of its reason for existence. A statement of its reason for existence. कंपनी का एग्जिस्टेंस क्यों है वो आपका बताता है मिशन स्टेटमेंट. A statement of some desired future state. A statement of future desired state. A statement of future desired state. उसके बाद usually referred as a vision. एक सेकेंड देना, इसका पॉइंट आगे का usually referred as vision. Usually referred as vision. Point number 3, a statement of key values. A statement of key values that the organization is committed to. Statement of major goals. Statement of major goals. तो यहां पर आपके कितने पॉइंट बन जाते हैं? ये 4 पॉइंट बन जाते हैं. अब आ जाते सेकेंड पॉइंट के ऊपर. ये आपका फर्स्ट पॉइंट था कॉर्पोरेट मिशन एंड मेजर गोल्स सिलेक्ट करने का. सेकेंड पॉइंट है आपका analyzing the organizational external competitive market to identify opportunities and threat. तो एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिव मार्केट को अपन एनालाइज करने वाले हैं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट को पता करने के लिए. एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशंस. अगर तुमको याद रहेगा तो अपन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई कर देते हैं ऑपरेशन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट के लिए, और इंटरनल एनवायरनमेंट को अपन एनालाइज करते थे वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ के लिए. एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन external opportunities
Analyze the organization's external opportunity, external, external competitive environment, to identify opportunities and threat. क्योंकि अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एक ऐसा चीज है जो अपने कंट्रोल में नहीं है, वो बाहर से आने वाली चीज है, इसलिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ये अपने इनहेरेंट रहती है, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहती है, इसलिए वो इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट बनती है. द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बोल देना, मैनेजमेंट लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लानिंग इज द राइट वर्ड. प्लानिंग processes is an analysis process. Planning process is an analysis of organization, organization's external environment. अब इसी को एलोबरेट किया जाएगा. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अपन क्या करने वाले हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने वाले हैं. क्यों करेंगे? द एसेंशियल पर्पस of external analysis, the essential purpose of external analysis of analysis is to identify strategic opportunities and threat within the organization. Operating environment that will affect how it pursues its mission. How it pursues its mission. Three interrelated environmental should be examined. Three interrelated environment should be examined. The industry environment in which company operates. The industry environment in which company operates
The country or national environment. The country or national environment. Last wala, the wider socio-economic and macro environment. The wider socio-economic or macro environment. ये आपका बन जाता है पॉइंट नंबर 2, एनालिसिस ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस होएगा तब अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट के बारे में चर्चा होगी. अब अपन देखने वाले इंटरनल एनवायरनमेंट. जब इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस होएगा तो किसके बारे में चर्चा होगी? आपके स्ट्रेंथ एंड आपके वीकनेसेस. Point number 3. Point number 3. Analyze the organization's internal operating environment. Internal operating environment to identify strength and weakness. Internal analysis, the third component of strategic planning process focuses on reviewing the internal analysis, reviewing the resources. Process focuses on reviewing the resources capabilities and competencies of a company. The goal is to identify the strength. Goal is to identify the strength. Goal is to identify the strength and weaknesses of the company. सब साथ में मेरे. The next component of strategic thinking requires generation of series.
The next component of strategic thinking, the next component of strategic thinking requires the generation of a series of strategic alternatives or choices of future strategies. Or future strategies to pursue given the company's internal strength, given the company's internal strength and weakness, company's internal strength and weaknesses करता हूं, internal strength and weaknesses. तो ये आपका पॉइंट बन जाता है पॉइंट नंबर 3, एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट. फिर आ जाते हैं लास्ट के 2 पॉइंट बचे हुए, पॉइंट नंबर 4 पे आएंगे. पहले पॉइंट नंबर 4 करके लेते हैं, आ जाओ फटाफट. पॉइंट नंबर 4 क्या रहेगा? अब अपन ने एनालिसिस कर लिया इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आपके अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट और स्ट्रेंथ, वीकनेसेस. अब अपने को उसके हिसाब से की स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करने की है. तो सिलेक्ट स्ट्रेटेजीज, select strategies. Managers select strategy. Manager select strategies that build on the organization's strength and correct its weaknesses. In order to take advantage advantages of external opportunities and counter external threat and counter threats. In order to select the right strategy,
Managers compare and contract the various alternatives. Strategies. Managers compare and contrast the various alternatives. Compare and contrast the various alternatives, possible strategies, various possible strategies against each other, and then identify the set of strategies. Identify the set of strategies that will create and sustain a competitive advantage. That will create and sustain a competitive advantage. It will create and sustain a competitive advantage. ये आपका पॉइंट बन जाता है यहां पर फोर्थ वाला सिलेक्ट स्ट्रेटेजी का. लास्ट पॉइंट जो ओपन करने वाले हैं, फिफ्थ पॉइंट, इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजीज. जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है उसको क्या करना है अभी? इंप्लीमेंट. लास्ट पॉइंट रहेगा ये, implement the strategies. Implementation process है. In order to achieve a competitive advantage, in order to achieve a competitive advantage, and increase profitability, increase profitability managers must put those strategies selected into action. Strategy implementation involves taking actions at the functional, business and corporate level. To execute a strategic plan.
ये आपका क्या बन गया भाई साहब? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज। बिल्कुल भी ज्यादा बड़ा आंसर नहीं है, एकदम छोटू सा प्यारा सा आंसर है ना? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज। ये आंसर लिख के लेंगे सब मेरे साथ में, क्या बताओ? Is everybody with me? बहुत छोटा है ना? आ जाओ। खत्म नहीं हुआ है, तुम बोलेंगे सर बहुत हो गया आज के लिए, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। एक और आंसर लिखेंगे अपन। बिजनेस एनवायरनमेंट एग्जिबिट्स मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी अच्छा ये कैरेक्टरिस्टिक बताने की, ये तो अपने को मालूम है ना यार। बिजनेस कॉम्प्लेक्स होता है, डायनामिक होता है, मल्टी फेस्ड होता है, फार रीचिंग इंपैक्ट देके जाता है। इतना छोटा आंसर पहले दिखा ही नहीं। कोई नहीं, जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे चीजों का सामना करना पड़ेगा। Business environment exhibits many characteristics. Some of the important characteristics are, some of the important characteristics are, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई साहब इसके अंदर? पहला पॉइंट, एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स। एनवायरमेंट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। द बिजनेस एनवायरमेंट हैपेंस टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स। The business environment happens to be very complex. क्या है वो? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। As it comprises of number of factors, as it comprises of a number of factors, namely events, factors, condition and influences, conditions, influences arising from different sources, interacting with each other. Interacting with each other to create entirely new set of influences. To create entirely new set of influences. It is indeed difficult to instantly say. It is indeed difficult to instantly say
that factors constitute a given environment. Instantly say what factors constitute a given environment. Constitute a given environment. Environment is complex. Environment is a complex phenomenon. Environment is a complex phenomenon. And it is easier to understand. And it is easier to understand and it is easier to understand it in a segments and compartments. Understand it in segments or compartments rather than grasp in totally. Rather than grasp in totally. कुठलं स्टँडर्ड कुठल्या कॉलेजमध्ये आहे अच्छा ओनली अकाउंट्स नाही आहे बेटा बट एक environment is dynamic. The changing nature of environment is a constant. Changing nature of environment is constant. The dynamism of environment is largely due to large number of factors that continuously influence its character
एंड शेप. क्या क्या बोले मैडम? थर्ड वाला है एनवायरमेंट इज मल्टी फेस्ड. 2 पॉइंट बचे, फटाफट से लिखेंगे फिर वाइंड अप करेंगे अपन. एनवायरमेंट इज मल्टी फेस्ड. Environment is multi-faced. The perception of the observer. The perception of the observer. The perception of the observer is very important to identify. Is very important to determine the shape, to determine the shape and character of the shape and character shape and character of three environment. Of three environment. Change in environment may be prescribed differently. Change in environment may be prescribed नहीं, परसीव्ड डिफरेंटली है. गलत पढ़ा मैंने, वो अलग लाइन है. परसीव्ड डिफरेंटली by the different individual. By the different individual. भाई इसके बारे में अपन ने बहुत चर्चा करी है, बहुत एग्जांपल्स भी दिए थे मैंने. एक चीज, एक अगर कोई इंसिडेंट होता है तो वो इंसिडेंट किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है, तो किसी के लिए क्या बनती है? थ्रेड बनती है. वो आदमी टू आदमी उसके पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको क्या कंसीडर करेगा. थ्रेट कंसीडर करेगा क्या अपॉर्चुनिटी कंसीडर करेगा. द चेंज एंड डेवलपमेंट may be considered to be opportunity, may be considered to be an opportunity the change may be considered to be an opportunity to one and a threat to other, and a threat to other. Fourth, environment has far reaching impact. Last point है, environment has far reaching impact.
The impact of environment, on an organization, the impact of environment on an organization is huge. The impact on an environment of environment on an organization is huge. It critically underpins the growth. It critically underpins the growth and profitability of an organization. And profitability of an organization. Profitability of an organization. एक पेज ऐड कर देता हूं, छोटा सा 2-3 लाइन लगेंगे और कहां पे पूछे अपन? Any changes in the environment any changes in the environment affect the organization in more ways than one. In more ways than one. The very survival and existence of organization is critically dependent on its environment. तो ये आपका पॉइंट बन जाता है पॉइंट नंबर 6, कैरेक्टरिस्टिक्स. एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स, एनवायरमेंट इज डायनामिक, एनवायरमेंट इज मल्टीफेस्ड, एनवायरमेंट हैज far reaching impact. Environment has what? Far reaching impact. तो यहां पर आपके 3 पॉइंट बन जाते हैं. लिख के हो गया कि एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे. डन है. नेक्स्ट जो अपन क्वेश्चन देखने वाले, पॉलिटिकल फैक्टर्स को अपने को पूरा बताने का है. तो अपन पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है उसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे कि पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है. ठीक है, वो एक आपका आंसर रहेगा. फिर पोर्टर के 5 फोर्स फ्रेमवर्क देखेंगे अपन. पोर्टर के 5 फोर्स फ्रेमवर्क देखेंगे. कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर, इंडस्ट्री डिमांड, कॉस्ट कंडीशन, एग्जिट बैरियर वगैरह. ठीक है. फिर उसके बाद अपन देखेंगे स्टेप्स ऑफ फॉर्मल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देख लेंगे. स्टेप्स ऑफ फॉर्मल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो हो गया अभी अपना.
तो यहां पर मेरे को एक कुछ नया क्वेश्चन लाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 चेंज होगा। फिर बीसीजी मैट्रिक्स है, डिस्कस बटरफ्लाई फ्रेमवर्क है क्या? ठीक है, तो ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन बचे, कल खत्म कर देंगे अपन। कल मोस्ट प्रोबेबली आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अगर कुछ कम ज्यादा मेरे को एक हाथ कुछ क्वेश्चन लगता है तो फिर मैं वो डाल दूंगा। मेरे को नहीं लगता है कोई क्वेश्चन बच जाएगा, सारे क्वेश्चन तो तुम्हारे रिपीटेटिव है। ठीक है, ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही, बाकी अपन मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय। ये 3 क्वेश्चन क्या कर लेना आप लोग, अच्छे से लर्न करने का काम करना। आज इवनिंग में क्लास होगी क्या, कौन सी? लाइक नहीं किया बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक करने का भी काम करो यार, लाइक का बटन दबा दो। ग्रुप पे आएगा, ग्रुप पे आएगा, ग्रुप पे आएगा, ग्रुप पे आएगा। सर सेकेंड चैप्टर बड़ा है, आप ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। अरे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ज्यादा हो तो दू ना, इंपॉर्टेंट है बट क्वेश्चंस तो लिमिटेड है उसके अंदर। ऐसा थोड़ी है कि बड़ा है तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दी है। कितने क्वेश्चन वो चैप्टर के अंदर गिन लेना तू एक बार, कल मेरे को अगले लेक्चर में बता सर इतने इतने क्वेश्चन है टोटल, आप इतने ही इंपॉर्टेंट दे रहे हो। कल इल्जाम लगाइयो मेरे ऊपर, ठीक है? ओके चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, बाकी अपन मिलते हैं कल के लेक्चर में। अगर तुम में से किसी ने अभी तक गूगल फॉर्म नहीं भरा है तो गूगल फॉर्म भर दो। गूगल फॉर्म नहीं भरेंगे तो आगे आने वाली चीजों का तुमको एक्सेस नहीं मिलेगा। उसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी भी अगर तुमने ज्वाइन नहीं करी है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी है तुम्हारे सामने इधर, व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है?